Okay, guys. First impression, bad impression. Let me see. Just 1 minute. I will say everything whatever I wanted to say. Let me see if stream is working. So first of all, welcome to High Entropy, guys. Guys, I just updated the thumbnail today. I thought it's day 61. Like so far, Let me I see. Just Okay. 1 minute. Okay, So so what is today's plan? Today I'm starting streaming little early. If you see my last stream, it was in the late morning or early morning yesterday, or today only you can say. Today I'm streaming 2 times. You can say within the same day. So welcome, thanks for clicking, and welcome to High Entropy. I will say the same things repetitive. Then what is the benefit? Okay, so I'm gonna solve dynamic. Right now I'm solving the DP problems, dynamic programming problems. Okay, DP problems. It's better. I can say it properly. Okay, so what is the agenda for today? I'm just a little too excited. I feel like I'm so excited to start streaming early. By the way, okay, so yesterday I was watching a video. There, like a person or maybe the YouTuber, what he does, he just gifted some MacBook to a girl. So it's foreign video, so not in our India. So she used some English words that was a little catchy. She asked like a permission to initiate contact, and basically she wanted to hug that person, and I felt wow, it's completely new, something new you can use. And it was something that I felt like most of the people who ever watched that video, they will feel, oh, the way she said like permission to initiate contact, like when you are using language and with emotions, it makes uh, twice thrice what we say. Like for example, when I'm speaking in Hindi, i will I will be able to express my emotions in the with the language. But when I'm speaking in English, it will be more flat, and I don't know when to use, how to use express it. So that will come with lot of practice and learning with the native speakers. Yeah, but it was good. So I also wanted to say permission to initiate streaming. Not I don't want to hug you guys, so I won't say permission to initiate contact. Permission to initiate contact. It's more like I'm learning two things: DSA as well as language, spoken English. By the way, jokes apart. So day 60. So it's 61. Day 61 of DSA learning, and you can see my current streak. It's day 61. So maximum 61 days. So what we are going to do? We are going to solve dynamic programming problems only, bro. DP on subsequences. So I think rod cutting problem. I think this one also DP on a string. That will be something cool. I never tried, I believe. Okay, let's jump into this problem, and first let's solve it instead of blabbing. Okay, let me see if my notes and everything is ready, and jump rod cutting problem. So it's what it says: given a rod of length in inches and an array price where price I denotes the value of a piece of rod of length I inches, one based indexing. Determine the maximum value obtained by cutting up the rod and selling the pieces. Okay, make any number of cuts or none at all, and sell the resulting pieces. I think any number of cut. What do you mean by n inches? Then we can make n cuts, right? Maximum. Given a rod of length n inches and an array price where price I denotes the value of price of length of I inches. Hey, what the heck? I inches, one based index. Okay, that means price of 1 inches. If price of 0,
will represent determine the maximum value obtained by cutting up the rod and selling the pieces. Make any number of cuts or none at all and sell the resulting pieces. Okay, we have given a rod of n inches and array I denotes the value of pieces of rod of length of I inches based on index and determine the maximum value obtained by cutting. Okay, what will be the length of prices of I and suppose n is 8, then 1 2 3 4 5 6 7 8. Yeah, that's what I was thinking. Okay, so 1 to n different inches, max length n. So it's a similar to knapsack problem only, man. You can think of it similar to, okay, I will tell you, it's pretty similar to the, no, it's not pretty similar, but it's similar to the knapsack. I will show you how it is similar to the, and it's bounded knapsack, not unbounded, it's a bounded knapsack, you can say. 1 6 8 9 10 19 7 20. Okay, these are the numbers and we have n equals to 8. Let's see, where are you, bro? Where are you? Imagine, so this is you can think of like a value array. These are the different values that you will get, and we have maximum weight or maximum length, that is weight. W is 8. You have maximum knapsack of 8 length, right? So you can get maximum size 8. Okay, now you wanted to get the maximum, like you can cut it into 8 pieces, right? If you will cut, and these are nothing but weight and value. We have weight, we have value, and these are items you can say 1 2 3 4 5 6 7 8, or you can say these are nothing but weight. You can say weight 1 2 3 4 5 6 7 8, right? These are the different weight, and this is value. And now you can say, like, if I'm taking weight 1, then can I take it again? Yeah, you can take it. So my bad, one thing I said at the end, that was wrong. It's unbounded, man. That's why when you are solving it, because you can consider more than one times, right? The same item you can take. It's not like you can take it once, you can take it again. And other things, it's same. So what is the plan here? So you are at this particular item. So the you can say you are at ith item. So its weight will be I plus 1 because you are starting from 0, right? So this is weight of it, and you will say, okay bro, what is capacity of it? It is 8. Now you will say, I'm considering this item, or let's say capacity is W. So you will say remaining capacity, you can say. So you will say, okay bro, this is I plus 1, this is the weight. If I plus 1 is less than W or equals to W, then you can take it. And if you are taking it, still you can be part of it. Like, still if the weight is lesser, then you can consider it. Else you are going to move to next. And another one thing you can say, like, you can move to next only if the weight is lesser than that, right? If weight is greater, then you cannot get it further. So that also you can reduce the step. So I will formulate the example with the proper way. So let's say we have function solve, and here I will say, okay, I will start with the first item. So I index represents, so item number will be
or you can say it's I plus 1. Okay, because 1 based indexing. So 1 inch, 2 inch, 3 inch, these are the different weights, and their exactly prices how much you can get for a particular piece if you'll cut it into. Okay, so here we'll say I, then you will say weight, whatever the remaining weight you have, then you will say okay, I don't need weight array because weight is nothing but you can calculate from I where you are and what will be the weight for it. Okay, now I'll say weight, and then I okay, sorry. Now you will say what else? We need weight, we need price, and we can say n, number of items, or number maximum, what is the value, n. So first thing, if you have reached to the last item, so we'll say if I equals to let's consider n minus 1, that means you are at the last index or the nth item, or you can say nth weight that possible is the weight. Maybe you can say you are cutting into the rod, so you will say 1 inch, 2 inch, 3 inch, and then you said like okay, n inch if I'm taking. Then if you are at this the last available option, then you will say now I have two options. If I plus 1 is the weight of that particular item is less than or equals to W, then okay, you will say okay, I can use this. Okay, then you will say okay, let's take greater than 0. Okay, I wanted to make it little simpler. So if weight, if W equals to 0, what does it mean? You don't have any capacity, now you cannot get anything, right? You won't get it. Or if I plus 1, this particular item's weight, is greater than W, what does it mean? Okay, this is bigger than what we are expecting in the knapsack, so you will say return pro, return 0. Okay, this is one thing. Now other thing, if it is not, then what does it mean? Weight is not 0, weight is less than I plus 1, this item's this cut off rod is smaller than the target rod, so you will say okay, or equals to. So you will say no problem, I can take it. And if I'm taking it, what you will say? I'm just thinking, do I need to split it by n? If you are at the end item, that means you can make only one piece, right? You cannot make further pieces. So why would I write? That's what I'm thinking. If you have n length of rod length is n, and if you are chopping or you are not cutting, you are taking n length rod, that means you cannot make n, you cannot take it twice or thrice, so definitely it will be one only. So you can say whatever the value that I'm getting, it will be price. Okay, other than that, what are other options? Imagine you are at some particular location and your weight is already became 0. If W equals to 0, what does it mean? You cannot further take, so return 0. And third option will be okay, if weight is 0, that means you cannot include further items because your knapsack is completely full. And the third option is we need to take memory. I forgot it. I, and what weight you are expecting. So you are at this particular rod and you are waiting for weight W is greater than equals to 0, return mem of I. Actually these all problems are very similar, so I'm repeating the same things. Otherwise you will say take equals to 0 if
So you will say if w or I plus 1 less than equals to w, that means you can take it, and you will say okay, I'm taking it. So taking it means take will become, you will add price of this, price of I, and you will say okay, no problem. Now can you solve again, and you will say I will retain the same, I wanted to include it or not include it, and then you will say okay, then you will say further steps. Weight will be, oh sorry, my bad. So weight will become w minus I plus 1. This is the weight, actual weight. Okay, not take, not take will be something, I'm not looking into that screen, that's bad. Okay, not take means you are not taking it, and simply that means you won't get any value. Simply solve, and you'll say bro, I don't want to take it, so I want to test out with another cent. Like now I'm at I length, so you'll say, or you can say I plus 1 length, because your I is index, so I plus 1. So let's take I plus 2, and let's see. I can further optimize it. No need to explore. I will do it here. You know what? This is the thing, and weight will remain weight, because it's a pretty similar. Result 2 is equals to take. Our goal is to maximize, right? So max of take or not take, and you can add memory of I and w, and you will say okay, and return result. Here you will say result and return result. I'm writing very bad. Okay, I think I'm still making some same. Okay, one more thing, if you notice what, okay, so if w equals to 0, that means we don't have any weight. And what are the other options? Suppose if you see, these are the, we are cutting the rod, so we have 1 length, then we have 2 length, 3 length, 4 length, 5 length, and 6, 7. So these are the thing. And imagine if I plus 1 became is greater than w, right? What does it mean? You cannot consider, suppose 2 is greater than what we are looking for. Our capacity is 1 and we are at 2. That means we cannot take 3, we cannot take 4, we cannot take 5, 6, 7, and so on. So that means you can return 0, bro. We cannot go further. I cannot explore further. So you will say, or if I plus 1 is greater than w. Here I am using the same condition. Here less than, not take we are considering. But before that I'm stepping out and I'm saying okay, then also I cannot take, so I don't need to explore further option for this particular thing. Great. Now let's jump and solve it. Oh, I forgot to use timer. Clock. Target is 1 hour. 1:00. Start. Pro, start. Where are you? By the way, if you wanted to, what do we say? Permission to initiate contact. Join my. I'm just riding, man. You can join it. Let me add one post. Hi guys, I'm experimenting myself. Starting live stream. You can join me. I'll post something. I'm using the platform. Okay, you can join me, bro. I will see you the link. Okay. I don't know if anyone is gonna watch it, to let me know. Okay, let me. Hi, I'll post something. Welcome to using the platform. Hi, Entropy. You can join me, bro.
I will say you the link. Okay. If you want it, please join. I don't know. I will start using You Blue let me Show. know. Please join my Discord channel. Save it. Okay, let me. Oh, Hi, it's I'll like post a. something. Welcome to Lifted. Okay, let me say something like this. If you okay, let me say something else. If you want to initiate contact, something it should be initiate contact with me, please join my Discord. My Discord. I'm just I just like to let's continue the problem solving. I'm enjoying, bro. That's the good thing. No matter how the condition is. Okay, let's solve the problem first. Did I start clock? Yeah, it's time is moving fast. I equals to 0. No, bro. You have to create memory. So weight W I will consider. It will be n, and we need to create an array. So first thing is idea. What is idea? Memory we need to create, and here we are going to use to be my memory for sure. So I will keep -1 for I underscore in range. We don't need. I'm using underscore because we don't need to use this variable anywhere. So in range, and we'll say W plus 1, and for each item you will say for I in range, you will say n 0 to n minus 1 memory, and you will say okay, no problem. Now you will say return result, not result, self dot solve. Now it's very pretty much similar to what I am doing every time. So it is nothing but index for the first, second, third. So even if you wanted, you can start from 1, but I don't want to. It was like when I'm reducing one row. Though it's not needed, so but it's okay. So you will say okay, now you will say okay, price I will provide n, I will provide weight. Okay. Oh my god, do I need anything else? Do let me know, because I feel like def, oh god, what I'm doing, def self, you don't need to use self and I. By the way, this is the thing, if I even I say like if W equals to 0, what does it mean? Weight equals to 0, that means you already calculated the weight and now you cannot get further values price, so return 0. Or then I'm just considering at a starting only. If I plus 1 is greater than W, greater than equals to W, not equals to, greater than W, that means further if you will try to obtain cut the rod, then you won't be able to match the weight. Capacity is smaller than what you are expecting, whatever the rods that you are going to cut, so it won't work. So return 0. If I equals to n minus 1, you will say, that means you are at the end. So if you'll say, if I'm repeating the same things or what, if weight equals to 0 or I plus 1,
Okay, if I equals to n minus 1, and now I don't need to consider this weight equals to 0 or weight equals to I plus 1 equals to greater than w. So you will say we are already covering it, so it will consider it, and you will say wait, do I need it or not? I think I don't need it, because this will be sufficient. Suppose if I equals to n minus 1, I am at this location, and or maybe if we are going further, maybe you are at you considered I equals to n minus 1, and in using the regular terminology, taking or not taking, and now you move to I plus 1, so you will say okay, I plus 1 is greater than w, right? So you won't need it. I think yeah, wow. So you will say w I forgot memory, so bad. I'm bad at, still my consciousness is not, I mean still I'm working unconsciously, I believe. If mem of I and w, you know w, the word where the treasure is hidden. No, the tree is in the shape of w, and the treasure golmal, a golmal 2, a golmal 3. No, not golmal, bro, dhamal. I think they are releasing one more part of it. By the way, it's not necessary. What you did, bro? I need to focus on it. Greater than equals to 0. That means you have something in the memory and you can use it. Okay. Else take equals to 0. And if I plus 1 less than equals to w. By the way, do I need it? I don't need it, because every time you are gonna say, you are already covering it, I plus 1 greater than w, so that means it will be less than w. So take will be something, you will say self dot, okay, price of I plus self dot solve. I mean I'm just trying to make it simple, though it's you will say I'm at the same location, and weight will become weight minus I plus 1, because this is I is representing only the index. And oh my bad, first thing is price and then w and then memory. I used the bad order, but it's okay. So bad. Take, not take, bro, you have to do it quickly. Self dot solve, and you'll say I, you are not going to price will remain same, because it's, and I will move to I plus 1, and then you'll say okay, no problem, I will say n, I need weight will remain weight, memory will remain memory. Finally, result will be nothing but max of take, not take, return result. Before returning result, I think I will make some blunder. I don't know why, but I feel it. W equals to result. Let's see what are the blunders that I made. No blunders. Very bad. Bad. Good. Red signal. Oh wow. I mean, I'm mentally not strong or what? Because I'm solving this problem, but still I feel like I don't have confidence or what. By the way, let's jump into the tabular method. That will be very simple, bro. I'm telling you. What is time right now? 7:40. I'm targeting 2 problems if everything goes good. Or I will watch video. Man, because I have to stop sloth mode. For sure. So let's jump into table. Just we have to create table. Okay. So this is our table. And we are going to have a dinner here.
I watched one video. The boy was approaching to girls, and the girl said, "Okay, she's in call with someone, or she's already." Hmm. No, she said like, "Okay, I remember the word. What the heck? Something is wrong." Like you see background. So she said like, "Okay, she's talking to someone." So the boy said, "Okay, I'm that someone," and people appreciated it so much. I think it's a short video. I don't know, but I watched a short video of it. Maybe he created complete video. So it was like he's approaching to strangers and asking like, "Can I get your number?" or something. It's a foreign video, not Indian video. So you can see a lot of people doing creating such kind of content. So the good thing was like he when he said like, "I'm talking to someone," he hasn't responded, "Okay, no problem, thank you so much, bye bye." He said like, I'm that someone. And the way he said, it feels like, okay, on that particular moment, now it's easy to understand and you will feel okay, everything is good. But the moment when you are at that time, particular real time, you have to improvise and you have to tell something, it's not scripted or something, then you will feel okay, things are. For example, when you are having a fight with someone, and I always used to do the same things, like whenever I have a fight with someone, maybe I won't be able to get the exact words or abuse whatever to use, but when I'm coming back and then I'm thinking, okay, I could have said this, I could have done it better. And real time, I don't know what happened. By the way, let's focus on the table. So we are going to play chess. Okay, this is chessboard, chess of DSA. This is weight and this is item, you can say. So I will start from 0 1 2 dot 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 n minus 1. Item index means I 0. 0 means its weight is the length is I plus 1. If it is I, this is representing j, and here we'll say, okay, if I have length 0, 1 length, no, sorry, my bad, these are weights, and you can say 0 length, and you have weight 0, it could be 1 2 3 4 5 and up to w, you can say. And here if you see, weight is nothing but the length of rod. If you have n length rod, what is remaining? If you already sold, let's say 5 units, so it will remain n minus 5, right? So this is what you have, this length, 0 length remaining. Then what will you get? If you have 0 length and 1 item, okay, or you can say I have 1 inches of rod but capacity is 0, then you will say I will get 0. Okay, 1. And for others, you will say I will calculate it. If I plus 1 is less than equals to, say, for this row, I am filling this row. What does it mean? This means we have, or even you don't need, you will simply say this does mean, it means I have 1 inch rod and okay, I have 1 I think I'm not able to explain it properly. Let me say it again. What it represent? This represents what length you are considering. Length, and this is the length of rod remaining. So here we have length, we have rod, capacity, and we have item.
I think I will be better if I'll use item and capacity and item weight. Okay. Let's do it. So if we have zero capacity and we have one item of 1 inches, okay, then what will be? You cannot take it, right? Zero. Another options will be here. If you have one capacity and you want to fill with one, then you can do it. You have only one option, so you will get maximum one. Now you have two capacity and you wanted to fill with one. So you will say, okay, no problem, I'll do it. Here I'm using different approach. So I will generate it. First item, second item, base case. Let's fill base case. What is the base case? If I plus 1 less than equals to j, that means you can use it, right? So you will say return, or you can say store. Store means previous, we are going to use previous of j will be nothing but j percentage by, not j percentage, j by I plus 1 into price. How many times you are taking it? Price of I. Okay, this is one option. Else, if you won't be able to get, else written previous of j, that means you cannot fill it to 0. Base case other, you will say okay. For other it will be like you have two options, take or not take. Take will be 0. If you can say I plus 1 less than equals to j, then you can consider it. So you will say okay, no problem. Then current will be current of j will become current of j will be price of I and plus table, not table, here we are using current. Now I remember it. Current of I, you will say current of I j minus okay, I plus 1. Yeah, my bad. Don't you feel like I'm just not able to explain it properly? I don't know what's wrong with me. I'm getting it, but explanation is little difficult for me. Explaining it to someone is little difficult for me. So I'm just working on it, guys. I will teach you better. For the timing, you can teach me how to teach others. If this is not the case, then only you can take it. Not take means you are not taking, right? So current of j will be, you are not considering this side, this length. So current, it will become like okay, I do not want this length. J. Here you are starting with this. Here are what exactly we are doing. These are the lengths of. So say, so what I'm saying, let's say you are at this location. You are at this location. So you will say okay, if I can take it, then what are the other options if I won't take it?
Let me solve it. Some problem is there. Anyone is solving? I'm just curious to know. How much video length is it? No problem. Okay, no problem, no problem. Let me say it again. What exactly we are doing here? Let me solve in another approach. So here we'll say previous equals to -1 for I in range. I don't need I. W plus 1. W I'm just considering, but it's not needed. Again, for and current will be nothing but -1 for, just these are placeholder, in range W plus 1. Then base case. So base case means we have one length of rod, and then we are calculating what are the different values that we can get from it. Suppose you are explored all the options. Now you have only remaining one length, and now you wanted to see if you can get it or not. It is more like you are started from five length, 4 length, 3 length, 2 length, and 1 length. Now you are saying, okay, what will be the possible values when I'm considering 1 length? Then you will return it. Okay. So you will say for I in J in range W plus 1, and okay, so you will say, okay, no problem, I will take these value items, okay, and I will start from 1, because you can say previous of 0, that means equals to will be 0, and then you will say previous of J is nothing but if I plus 1 is less than equals to J, then previous of J is nothing but how do I need to do this? I'm doing this. It's stupid. If I'm using 1, then what is the benefit of it? You will say previous of J as nothing but price of 0 into J 1, 2, 3, because all are, if you are taking 1 unit, then that is the only thing. And other for I in range 1 to n plus 1, n, and for J, that is nothing but J in range, I will say 1 to W plus 1, and here I will say current of J 0 is nothing but you are at 0, unit 0, so 0. Okay, then J, if I plus 1 is less than equals to J, you can take it. Take equals to 0. Take will become take is nothing but price of I, and plus you will say, okay, no problem, if I will take this, then plus
previous current. If I'm reducing this weight, I've taken this, so now what is remaining part that I need to know? So you will say J minus I plus 1. I will keep it, is easy to get, grab, take, not take is nothing but price of I, no will be not there, will be there, previous of the weight will remain same, so you will say okay previous, and so not previous, current of J, I'm using double R, right, equals to max of take, not take, and finally you will say previous equals to current, and you will say previous of weight but okay, so it's then, now the thing is what is thing? Minimum coins, I think I solved it. Only the problem is not problem. DP on a string. Longest common subsequence. I always hate this kind of problem. I don't know. No, I don't hate. I mean, I always feel like I won't be able to do these types of problems. Longest common subsequence, LCS, longest substring, subarray. These. So I need more practice on these. And you can see today I'm planning to get haircut as well as beard cut. I mean, let's see how things goes. Let's go through oh, it's like I opened two things. That's what I thought, bro. There are 10 problems on longest common substring. I wanted to see what you wanted to see. Aditya Verma video. Dynamic programming, bro, super. Hi. Today. Okay, so I need to go through this one, longest common subsequence introduction. Yeah, let's jump. Hi again. Welcome. So अभी इस वाले Hey bro. Okay, so this is another type of pattern. So वीडियो में हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट पैटर्न, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, राइट? I will note it down, bro, because I feel what I feel doesn't matter. DSA. You cannot see my notes. Okay, I will say Aditya Verma DP. और इस पैटर्न पे जितने क्वेश्चन बनते हैं ना, इसने किसी भी, मैंने पूरी कोडिंग कर ली भाई, डीपी की बात भी नहीं करूँ मैं पूरी कोडिंग की बात कर रहा हूँ कि इससे जितने क्वेश्चन बनते हैं ना, जितने वेरिएशन इस क्वेश्चन के हैं, इतने किसी भी क्वेश्चन के नहीं है, राइट? तो ये अगर तुमने बहुत अच्छे से कर लिया ना, तो इसके कम से कम मैंने 50 लिखे हैं, पर क्या पता और भी हो, मेरे को 50 मिले मेरी कोडिंग एक्सपीरियंस में, पर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसके बहुत सारे वेरिएशन है, ठीक है? तो एलसीएस अपने को बहुत अच्छे से पढ़ना है। मेरे तो एक तरीके से मैं जैसे पढ़ाऊँ ना, उसी फ्लो में पढ़ना, पहले एलसीएस पढ़ना। अगर तुम इनमें से किसी भी वीडियो पे आते हो बीच में, तो पहले शुरुआत से एलसीएस पढ़ना, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली पे आना।
एक टॉपिक पूरा पढ़ना, एलसीएस पढ़ा तो एलसीएस पूरा पढ़ना, नेट से नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, तो एलसीएस पढ़ा तो एलसीएस की स्टार्टिंग वीडियो से पढ़ना, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या फ्लो, मैं कैसे पढ़ाने वाला हूं उनको। सबसे पहले मैं तुमको लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसका रिकर्सिव अप्रोच लिखेंगे जैसे पहले करा है, और उसके बाद हम इसका बॉटम अप लिखेंगे, मतलब मेमोराइजेशन करने के बाद लास्ट में हम लोग इसका टॉप डाउन डीपी लिखेंगे, राइट। जैसे अभी तक हम लोग जो मेन पैटर्न डिस्कस करते हैं, अभी तक हम लोग एक पैटर्न देखा केवल नेटसेक में हम लोग ऐसे किया था, रिकर्सिव अप्रोच लिखी थी, बॉटम अप लिखा था, मेमोराइजेशन लिखा था, और उसके बाद टॉप डाउन लिखा था, राइट। इसको भी हम लोग ये मेन पैटर्न ना, इसको मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा। इसको भी मैं पहले रिकर्सिव कोड लिखूंगा, फिर मेमोराइज कोड लिखूंगा, फिर टॉप डाउन कोड लिखूंगा, और उसके बाद जब एक बार हमारे पास टॉप डाउन कोड आ जाएगा, फिर हम उस कोड में वेरिएशंस देखेंगे कि हम उस कोड में क्या क्या वेरिएशन कर सकते हैं, उससे कैसे कितनी डिफरेंट प्रॉब्लम बन सकती है। तो बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ लिख के रखी है, जो कि मेरे हिसाब से इतनी प्रॉब्लम्स बनती है, और भी हो सकती है शायद, पर इतनी काफ़ी है मेरे ख्याल से। तो ये टोटल 14 प्रॉब्लम्स है, तो एक प्रॉब्लम ये एलसीएस जो हम मेन करेंगे पैटर्न प्लस 14। Bro, the way he written the problems, I had a longest common substring. What is this? Pray. It tells you shortest common super sequence, and the English. I became coder. I should be doctor. सो इस सेक्शन में मैं तुम लोगों को 15 प्रॉब्लम करना सिखाने वाला, खाली प्रॉब्लम्स नहीं, हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे, कंसेप्ट डेवलप करेंगे, और उसके बाद अगर 15 प्रॉब्लम के बाद भी कोई 16 न्यू प्रॉब्लम आती है उसको हम लोग अच्छे से कर सकेंगे, राइट। तो एक बार प्रॉब्लम पढ़ देता हूँ, अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो तो। हाँ भाई, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, it's not someone. I'm not getting what you are saying. उसके बाद हम लोग लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस का रिकर्सिव कोड, मेमोराइज कोड, टॉप डाउन लिखने के बाद हम लोग ये वेरिएशन पढ़ेंगे। सबसे पहला वेरिएशन है लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग, राइट। फिर हम लोग प्रिंट करना सीखेंगे लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, फिर शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस, प्रिंट करना सीखेंगे एससीएस को, मिनिमम नंबर ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन ए टू बी, मतलब अगर एक स्ट्रिंग रखी ए और बी, तो ए से बी बनाने में हम लोग को कितने नंबर ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन करने पड़ेंगे, मैं वो पढ़ देता हूं, बाकी हम लोग बाद में समझेंगे क्वेश्चंस क्या है। लॉन्गेस्ट रिपीटिंग सब सीक्वेंस, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ ए व्हिच इज सबस्ट्रिंग इन बी, सब सीक्वेंस पैटर्न मैचिंग, काउंट हाउ मेनी टाइम्स ए अपीयर एज अ सब सीक्वेंस इन बी, ए एंड बी क्या है स्ट्रिंग्स हैं यहां पर, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस, ये जो सेक्शन है ना, ये सब पैलिंड्रोम वाले क्वेश्चन है। पर पैलिंड्रोम के क्वेश्चन जो भी आते हैं ना, पैलिंड्रोम के क्वेश्चन जो है वो खुद ही एक सबसेट है किसका, इन क्वेश्चंस का। पैलिंड्रोम के क्वेश्चंस एलसीएस के क्वेश्चंस का एक सबसेट है, एलसीएस बड़ा सेट है, उसके अंदर पैलिंड्रोम के क्वेश्चन आते हैं, एलसीएस पे ही बेस्ड होते हैं वो। तो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस करेंगे हम लोग, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग करेंगे, काउंट ऑफ द पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग, मिनिमम नंबर ऑफ डिलीशन स्ट्रिंग टू मेक इट अ पैलिंड्रोम, और मिनिमम नंबर ऑफ इंसर्शन स्ट्रिंग टू मेक इट अ पैलिंड्रोम, राइट। सो बेसिकली ये फर्स्ट पैटर्न लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस प्लस दीस 14 प्रॉब्लम्स, जो कि टोटली इस पे बेस्ड है। मैं इसको अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ, उसके बाद मैं इनका इनिशियलाइजेशन बताऊंगा सबका, जो कि डिफरेंट हो सकता है अलग केसेस में, राइट। और फिर लास्ट में हम लोग इस कोड का, एलसीएस के कोड का वेरिएशन देखेंगे। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इतने क्वेश्चन कभी भी एक पैटर्न पे बेस्ड नहीं हुए, और तुमको अच्छा लगेगा कि ये इतने क्वेश्चन इसको आइडेंटिफाई करना कि ये कैसे एलसीएस पे ही बेस्ड है, राइट। तो हम इसको आइडेंटिफाई करना भी सीखेंगे, जैसे नेक्स्ट में सीखा था। सो ये केवल एक इंट्रोडक्टिव वीडियो है कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। अगले वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, रिकर्सिव। हाय अगेन, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक प्रॉब्लम से, पैटर्न एलसीएस से, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। क्या फ्लो रहेगा हमारा पढ़ेगा, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्या बोल रहे हैं, क्या इनपुट रहेगा, क्या आउटपुट होगा, और क्या पूछ रहा है। फिर हम लोग इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, उसमें हम लोग बेस कंडीशन डिस्कस करेंगे, और चॉइस रहेगा जिसमें हमको पहले होता है। फिर मैं इसका कोड लिखना सिखाऊंगा, राइट। ओके, सो विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। क्या होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अपने को दो स्ट्रिंग दे रखी होंगी, एक स्ट्रिंग एक्स है, एक स्ट्रिंग वाई, ये अपनी स्ट्रिंग्स है। एक्स स्ट्रिंग में क्या स्टोर है, ए बी सी डी जी एफ, और वाई स्ट्रिंग में क्या स्टोर है, ए बी ई जी एफ एच आर, ठीक है। और सिंपल तुम स्ट्रिंग बना सकते हो, स्ट्रिंग एक्स बना लेना, स्ट्रिंग वाई बना लेना, और दोनों में इनपुट लेना, जैसे इनपुट दे रखा हूँ, राइट। स्ट्रिंग एक्स स्ट्रिंग वाई और इनपुट लेना, तो अपना इनपुट ये दो स्ट्रिंग स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। इनपुट में केवल दो स्ट्रिंग है, हमको निकालना क्या है, हम लोग को लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस निकालनी है। लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस क्या है, जो इनमें कॉमन है, राइट। अगर मैं बोलूँ क्या इनमें कॉमन क्या है, तो मैं बोलता हूँ ए कॉमन है, यहाँ पर भी ए, मेक सेंस, राइट। बी यहाँ पर भी, बी यहाँ पर भी, ठीक है। सी है यहाँ पर, नहीं सी नहीं है, डी है यहाँ पर, डी है, जी नहीं है, और एच है यहाँ पर कॉमन, तो एच है, राइट। तो बेसिकली इसकी लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस क्या जाएगी, ए बी डी एच, राइट। सो ये आउटपुट में आ जाएगा ए बी डी एच। तो हम लोग को क्या देना है, ए बी डी एच देना नहीं, हम लोग को एक्चुअली इसकी लेंथ देनी है। तो अगर ये आया ए बी डी एच 1 2 3 4, तो आउटपुट में हम लोग को 4 प्रिंट करना है। तो बेसिकली वी हैव टू प्रिंट द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, आउटपुट में हमको लेंथ देनी है, ठीक है, मेक सेंस। अच्छा, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग नहीं है, क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर फिर से हम लोग वही अपना प्रीवियस एग्जांपल ले लेते हैं। लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस में क्या हुआ कि हम लोगों ने ये छोड़ के भी ले सकते हैं, राइट। यहाँ पर हमने ए बी लिया, सी छोड़ दिया, डी लिया, जी छोड़ दिया। तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग क्या है कि कंटीन्यूअस होना चाहिए। तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग अगर मैं इसमें बोलूँ तो यहाँ जाएगी कंटीन्यूअस क्या है, तो ज़्यादा साथ में ए बी साथ में, और ए बी यहाँ पर साथ में, और कुछ तो ज़्यादा लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग तो दिख नहीं रही मेरे को। तो इसकी लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग जाएगी ए बी, राइट। कंटीन्यूअस होनी चाहिए, ये कंटीन्यूअस है। डी भी आ रहा है, डी यहाँ पर भी आ रहा है, और बीच में यहाँ सी है, यहाँ पर ई है, तो ये कंटीन्यूअस नहीं होगा। तो अपन ये इसको नहीं ले सकते कि ए बी डी नहीं ले सकते, यहाँ कंटीन्यूअस होता है, सब स्ट्रिंग कंटीन्यूअस होती है, सब सीक्वेंस डिसकंटीन्यूअस होती है। तो यहाँ पर सब स्ट्रिंग नहीं निकाली हम लोग को, मैंने जस्ट क्लैरिफाई करने के लिए बताया, यहाँ पर हम लोग को डिसकंटीन्यूअस निकालना है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा 4, हमको लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस की लेंथ निकाल के देनी है, राइट। ओके, अब हम लोग
हमें स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा, तो मूव ऑन करते हैं रिकर्सिव डिस्कशन में। रिकर्सिव अप्रोच लिखेंगे इसका सबसे पहले, इस हमने बताया रिकर्सिव अप्रोच लिखते हैं, और रिकर्सिव ही उसको हम लोग या तो मेमोराइज कर सकते हैं डीपी बनाने के लिए, या तो उसका टॉप डाउन लिख सकते हैं, आइदर वे इज करेक्ट, ठीक है। तो हम दोनों करेंगे, पहले स्टार्टिंग तो रिकर्सिव से ही करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने तुम्हें क्या बताया, तुम्हें अगर नेक्स्ट टाइम कुछ भी याद हो, अगर नहीं है तो नेक्स्ट टाइम का वीडियो देख सकते हो, तो मैं तुम्हें यहाँ पर दोबारा जल्दी से रिकैप करा देता हूँ। रिकर्सिव सोल्यूशन में क्या सोचना होता है अपने को, तीन बातें सोचनी होगी। पहला तो क्या, बेस कंडीशन क्या होगी, दूसरी बात क्या है, चॉइस डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है। क्या क्या बताऊंगा एक एक करके। तीसरी बात क्या है कि अपने को इनपुट को स्मॉल करने की सोचिए कि इनपुट को कैसे स्मॉल करें, राइट, ठीक है। सो बेसिक रिकर्सिव अपने को तीन बातें, अगर रिकर्सिव सोल्यूशन कहना है तो ये तीन बातों पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे इनपुट क्या है, इनपुट है दो स्ट्रिंग x और y, राइट। तो हमको कैसे भी, अगर हम रिकर्सिव कॉल फंक्शन पे कर रहे हैं x और y, और ये रिकर्सिव कॉल अपने फंक्शन में दोबारा फंक्शन कॉल होता है, तो इस बार ये स्मॉलर x होना चाहिए और स्मॉलर y होना चाहिए, राइट। ये जो x है और ये जो y है, ये कुछ ना कुछ पहले से इसकी लेंथ कम होनी चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। पहला इनपुट जो है, इनपुट को हमेशा स्मॉल करने की कोशिश करो, तभी रिकर्सन खत्म होगा, रिकर्सन खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम में भी बता चुका हूँ, पर इतना कुछ जरूरी नहीं है, यहाँ पर मैं दोबारा रिकैप करा देता हूँ। तो इनपुट को मैं कैसे खत्म करते हैं, इनपुट से रखा है मान लो एरे स्ट्रिंग है जो भी, हम लोग उसको पीछे से चेक करते हैं, राइट। हम लोग इस वाले ब्लॉक पहले से एरे क्या है 0 1 2 3 4 और ये एरे दे रखा है, तो हम लोग से लास्ट जो है एरे साइज क्या है 4, साइज मान लो n है, तो हम लोग n-1 चेक करेंगे सबसे पहले, राइट। और n-1 जो है इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स चेक करेंगे और इसको डिसाइड कर लेंगे। डिसीजन क्या लेंगे वो अपन देखते हैं, अभी अपन नहीं सोच रहे डिसीजन क्या, डिसीजन बेस करेगा चॉइस डायग्राम पे। बस मैं बता रहा हूँ कि स्मॉल कैसे करना है, अपने को इनपुट है और इनपुट को स्मॉल इनपुट में कैसे चेंज करना है रिकर्सन में। तो हम लोग लास्ट का देखते हैं एलिमेंट, और लास्ट के एलिमेंट को डिसाइड करते हैं अपने चॉइस डायग्राम से, जो भी करना है डिसीजन लेना है, और उसके बाद हम लोग इसको हमेशा के लिए हटा देते हैं और अपने पास इनपुट ये बचता है। तो हम लोग जो इसका साइज पहले क्या था, अगर साइज n था, यहाँ पे 4 है, n 4, अगली बार जो अगली बार प्रीवियस अपन कॉल करेंगे वो अपन कॉल करेंगे साइज n-1 के लिए, 3 के लिए, और इसको अपन नहीं कॉल करेंगे, इसको हमेशा के लिए हटा देते हैं। तो ये हो गया हम लोगों ने तीसरी चीज, स्मॉलर इनपुट पे कॉल करना है। अब आते हैं बेस कंडीशन पे। पहली चीज जो रिकर्सन सोचनी है, मैं पता तीन चीजें सोचिए, बेस कंडीशन, चॉइस डायग्राम और थर्ड चीज क्या है, स्मॉलर इनपुट। स्मॉलर इनपुट समझ आ गया कि कैसे करना है, हम लोग को लास्ट का देखना है और उसको उसके बाद n-1 पे कॉल कर देना है। तो यहाँ पे इनपुट है क्या, यहाँ पे एरे नहीं, यहाँ पे स्ट्रिंग है, कोई बात नहीं। स्ट्रिंग क्या है अपने पास, हम लोग पहले दो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग्स दे रखे हैं, राइट। ऐसा कुछ इनपुट था अपने पास a b e d f h और r, तो हम लोग इसकी ये लास्ट का देखेंगे, इसका लास्ट का देखेंगे, उसके बाद डिसाइड कर लेंगे कि इसको लेना है, इसको लेना नहीं लेना, उसके बाद ये कॉल करेंगे, बाकी बचे हुए में, राइट, इसको हटा देंगे मतलब, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बेस कंडीशन में। बेस कंडीशन कैसे लिखते हैं, मैंने तुम्हें नेक्स्ट के वीडियो में बताया था, अगर नेक्स्ट नहीं पढ़ा तो नेक्स्ट भी पढ़ो। नेक्स्ट पे 7 क्वेश्चन बनते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, और अनबाउंडेड नेक्स्ट पे 4 क्वेश्चन बनते हैं, टोटल 11 क्वेश्चन नेक्स्ट पे भी बनते हैं, राइट। अगर नेक्स्ट नहीं पढ़ा तो रेफर करना नेक्स्ट को भी, वहाँ पर मैंने काफी अच्छी चीजें सिखाई हैं जो काफी काम आएंगी कोडिंग में। सो बेसिकली अभी बेस कंडीशन में क्या है, मैं ये बता चुका हूँ, मैं रिवाइज करा था जिन्होंने नहीं देखा पुरानी वीडियो। बेस कंडीशन में हमको क्या करना था, थिंक ऑफ द स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट। बेस कंडीशन निकालने के लिए थिंक ऑफ द स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट। कभी ऐसा मत करना कि मैंने फंक्शन चलाया इनपुट पे, लेट्स से n पे चलाया, तो फंक्शन पे किसको कॉल करेगा, फंक्शन n-1 को कॉल करेगा, फंक्शन n-2 को कॉल करेगा, n-2 n-4 को कॉल करेगा, जो भी है ऐसे चला के कभी मत देखना। और ये मैं सोचना चला के देखूंगा, फिर मैं देखूंगा कि बेस कंडीशन कहां हिट कर रही है, क्या होगी बेस कंडीशन कहां रुकना है, ऐसे तुम अगर रुकोगे ना तो कभी रुक ही नहीं पाओगे। अरे बात समझो, ऐसे रिकर्सन चला के बेस कंडीशन निकालने वाले लोग ना बहुत गधे लोग हैं भाई, मत करना ऐसा कि रिकर्सन चला के देखना कि बेस कंडीशन क्या आएगी, नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं, बेस कंडीशन जल्दी देखनी है, थिंक ऑफ द स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट, थिंक ऑफ द स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट, ठीक है। इनपुट क्या है यहाँ पर, स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट, इनपुट है स्ट्रिंग x और y, मेरे को स्ट्रिंग रखिए ये और ये स्ट्रिंग रखिए। तो स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट, स्मॉल कैसे करोगे इसको, और वैल्यू लो, मतलब लेट्स से ये स्ट्रिंग है, इसका साइज है n, तो ये स्ट्रिंग है, इसका साइज है m, राइट। लिख लेता हूं मैं, लेट्स से आदित्य है और वर्मा है, दो स्ट्रिंग रहती है, राइट। तो इसका साइज है 6 और इसका साइज है 5। सो मेरे को क्या सोचना है, स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट सोचना है, जो साइज है ये तो है, इसको स्मॉल करना है, राइट, और वैलिड भी होना चाहिए, स्मॉल करना है और मेरे को ये वैलिड भी होना चाहिए। तो क्या इनपुट होता है, अपन अगर बोले कि लेट्स से n मैं लेता हूं -1, तो क्या मतलब होगा, क्या ये वैलिड इनपुट होगा कि साइज स्ट्रिंग का साइज -1 है, इसका तो कोई मतलब नहीं निकलना। तो n = 0, n = 0, m = 0, क्या यही स्मॉल वैलिड इनपुट होंगे, सोचो एक बार। स्ट्रिंग का साइज है, स्ट्रिंग का साइज रहता है अपने को 10, अब इसको छोटा करेंगे, स्मॉल करो और तो क्या होता है 9 हो सकता है, और स्मॉल करो 8 हो सकता है, करते करते और स्मॉल करो 1 हो सकता है, और स्मॉल करो स्ट्रिंग 0 हो सकती है, एम्प्टी स्ट्रिंग हो सकती है, राइट। और स्मॉल कर सकते हैं क्या, नहीं। तो स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट क्या है अपने पास, 0। आ रही है समझ में, क्या बोल रहा हूं, स्ट्रिंग का साइज देखो, स्ट्रिंग का साइज जैसे 10 दे रखा, तो इसको देखो 9 कर सकते हैं, हाँ वैलिड है, 8 कर सकते हैं, हाँ वैलिड है, करते करते 2 कर सकते हैं, हाँ वैलिड है, 1 कर सकते हैं, वैलिड है, और एम्प्टी स्ट्रिंग हो सकती है, नल स्ट्रिंग, ठीक है। 0 साइज वैलिड है, -1 इनवैलिड है। तो स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट सोचना है, क्या सोचना है, स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट। तो क्या हो जाएगा, n = 0, m = 0, ठीक है। अब हम लोग को बेस कंडीशन का कोड लिख लेते हैं, बेस कंडीशन में आ गए हैं। तो बेस कंडीशन पे ये इनपुट सोचो, और इसके लिए सोचो एलसीएस क्या आएगी, जो अपने को एक स्ट्रिंग रखी है x और स्ट्रिंग रखी है y, और उसमें स्ट्रिंग एम्प्टी है, ये स्ट्रिंग एम्प्टी है, तो अभी लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्क्रिप्शन क्या होगी, एम्प्टी होगी, मतलब उसकी लेंथ भी क्या होगी, 0 होगी। जब अपने को स्ट्रिंग x की भी लेंथ 0 रखी है, स्ट्रिंग y की भी लेंथ 0 रखी है, तो लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्क्रिप्शन भी दोनों में, जब स्ट्रिंग ही नहीं है, यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं है, यहाँ पे कोई स्ट्रिंग नहीं है, तो लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्क्रिप्शन भी क्या होगी, कॉमन भी क्या होगी, जब स्ट्रिंग ही नहीं है तो इनमें कॉमन कैसे निकालेंगे, तो लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्क्रिप्शन क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो बेस कंडीशन कैसे लिखोगे, तो अपने बेस कंडीशन में आ गया, तो एक समझ में आ गया कि बेस कंडीशन कोड क्या होने वाला है, n = 0 और m = 0, कोई एक स्ट्रिंग में 0 हो जाए, मैंने बोला कोई एक स्ट्रिंग में 0 हो जाए, क्या मैंने इनपुट लिया था, लेट्स से एक स्ट्रिंग है abc x और दूसरी स्ट्रिंग है एम्प्टी, कोई एक स्ट्रिंग में अगर एम्प्टी है तो लॉन्गेस्ट कॉमन क्या है इनमें से, इधर तो abc लिखा है, इधर क्या लिखा है, कुछ भी नहीं, तो लॉन्गेस्ट कॉमन क्या है, कोई कॉमन दिख रहा है, a दिख रहा है नहीं, b भी नहीं दिख रहा है, c भी नहीं दिख रहा है, लॉन्गेस्ट कॉमन क्या है 0। तो अगर कोई एक भी 0 है तो अपन रिटर्न कर देंगे क्या, 0, ये अपने को आंसर रिटर्न कर देना। तो ये तो हमारा बेस कंडीशन का कोड हो गया, ठीक है। बेस कंडीशन इज डन, स्मॉलर इनपुट इज डन। तीसरी चीज क्या रहेगी, तीसरी चीज है चॉइस डायग्राम। वो क्या होता है, काफी फैंसी टर्म लग रहा होगा तुम्हें, कैसे बनाते हैं चॉइस डायग्राम।
चॉइस डायग्राम ही मेन रिकर्सन का कोड होता है। मैंने ये पहले भी बताया कि रिकर्सिव फंक्शन क्या लिखते हैं अपन, यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न टाइप इंट या जो भी लिखेंगे, यहाँ फंक्शन लिखेंगे, इसमें आते हैं इनपुट्स, ठीक है। यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं बेस कंडीशन, रिकर्सन का जनरल बता रहा हूँ कि रिकर्सन कैसा दिखता है, और यहाँ पर जो लिखते हैं ना वो चॉइस डायग्राम पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है चॉइस डायग्राम पे, राइट। तो अगर ये इंट है, ये फंक्शन है, यहाँ पर रिटर्न टाइप होगा, ये रिकर्सिव फंक्शन है हमारा, ये इसके इनपुट है, यहाँ बेस कंडीशन होती है, और यहाँ पर चॉइस डायग्राम का कोड होता है। तो चॉइस डायग्राम आता है लास्ट। चॉइस डायग्राम क्या बोलता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं अपना सबसे पहला वाला जिससे अपने स्टार्टिंग करी, क्या था कि एक्स है ए बी सी डी जी एच, और वाई क्या है, वाई है ए बी ई डी एफ एच और आर, ओके, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, चॉइस क्या है अपने पास, क्या क्या चॉइस आ रही है देख लेते हैं। मैंने बोला लेट्स से मैं एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करता हूँ खाली कंसेप्ट समझाने के लिए। एग्जाम्पल को ले लेते हैं ए बी सी डी जी एच, फिर वापस एग्जाम्पल पर आएंगे, और ए बी ई डी एच यहाँ तक एच तक लेते हैं, आर लेते हैं। तो मैं बोला हम लोग किसको देखते हैं, इनपुट को लास्ट से देखते हैं और उसको फिर स्मॉल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट में देखा यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर भी एच है, ठीक है। तो एच एच मैच करेंगे, तो अपने को पता चल गया कि अपने आंसर में एच तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये कॉमन है, लॉन्गेस्ट कॉमन में एच तो आएगा। तो अपन बाकी किस पे कॉल करेंगे, इस पे और इस पे, इसमें कितना मैच कर रहा है। तो बेसिकली हम लोग क्या बोला है कि अगर ये लास्ट वाला जो हम लोग चेक कर रहे हैं दोनों स्ट्रिंग का, मतलब एक्स ये क्या है, इसकी लेंथ है n और इसकी लेंथ है m, तो x का जो n-1 है वो अगर इक्वल है y के m-1 के, अगर इफ ऐसा है तो हम लोग क्या है, x की लेंथ कम कर दो, x की लेंथ कर दो m-1 और y की लेंथ कर दो m-1। पहले लेंथ क्या थी इसकी n थी, यहाँ तक अपना लेंथ कम कर दी, आई बात समझ। हम लोग को ये करना है, ठीक है। और अगर ये सोचो कि ये इक्वल नहीं था, वापस पुराने वाले एग्जांपल पे आते हैं, ए बी सी डी जी एच एक तरफ है और दूसरी तरफ है ए बी ई डी एफ एच आर, राइट, ठीक है। अगर मैं देखता हूँ इसका लास्ट का देखा और इसका लास्ट का देखा, ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। एच है, यहाँ पर आर है, एच और आर मैच नहीं कर रहा, तो अपने को ये पता है कि लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस में नहीं आएगा, लॉन्गेस्ट कॉमन में वही आएगा जो कॉमन होगा, यहाँ पर एच था, यहाँ पर भी एच था, यहाँ एच है, यहाँ आर है, तो कॉमन तो नहीं है। तो हम लोग अब इसमें चेक करें उसमें चेक करें, नहीं, यहाँ पर तुम ध्यान से समझो, ये इसके साथ तो मैच नहीं कर रहा है। ये जब दोनों मैच नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये वाला अगर हम ये पूरा ले लें स्ट्रिंग, ये इसके साथ मैच कर जाए, जैसे यहाँ पर देखो इसका एच इसके एच के साथ मैच कर गया, तो बेसिकली हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि हम लोग ए बी सी डी जी एच है, यहाँ पर ए बी ई डी एफ एच आर है और ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, पर हो सकता है कि अभी हम लोग इसका ये वाला लें और यहाँ पर ये पूरा ले लें। क्या पता यहाँ पर अगर आर होता तो इसका आर इसके आर के साथ मैच कर जाता, राइट, यहाँ पर आर होता तो इसका आर इसके आर से मैच कर जाता। तो बेसिकली मैं बोल के रहा हूँ कि अगर ये मैच नहीं कर रहा है, दो सब स्ट्रिंग दे रखी हैं, हम लोग का लास्ट का देख रहे हैं, दो सब स्ट्रिंग दे रहा हूँ, स्ट्रिंग दे रखी है, हम लोग का लास्ट का देख रहे हैं। अगर हमने देखा ये लास्ट का और इसका लास्ट, ये एक्स है ये वाई है, और ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो हम लोग बेसिकली इस पर कॉल कर देंगे और इस पर कॉल कर देंगे, क्योंकि तो मैच कर गया ना, एक अपने पास ये कॉमन में इस केस में आ गया। पर लेट्स से ये अगर मैच नहीं करा, लेट्स से ये मैच नहीं करा, ये जो है इसका लास्ट मैच नहीं करता है, तो अपने पास दो चॉइसेस हैं। दो चॉइसेस क्या है, एक तो अपन ये स्ट्रिंग पूरी ले लें हुबहू और इसकी स्ट्रिंग को ये वाला हटा के लें, और दूसरी चॉइस क्या है, अपन ये वाली स्ट्रिंग जो है इसमें ये वाला हटा के ले लें और ये वाली स्ट्रिंग हुबहू ले लें। आगे बात समझ, कारण अभी ये दोनों आखिर का इनका मैच नहीं करा, तो पहले तो मैच कर गया, तो बेसिकली एक ही चॉइस अपने पास कि अपन ये दोनों का ही लास्ट वाला एलिमेंट हटा दो और ऐसा लिखता हूँ। तो अगर मैच नहीं करा है तो क्या होता है, हो सकता है यहाँ हो रहा है ना, यहाँ पर ये एच और आर मैच नहीं कर रहा था, राइट, यहाँ पर जो लास्ट एलिमेंट एच था और यहाँ पर आर था वो मैच नहीं कर रहा था। पर अगर मैं ये पूरा ले लूँ और इसमें केवल ये वाला लूँ, तो इसमें ये यहाँ पर एच दिख रहा है तुम्हें और यहाँ पर भी एच दिख रहा है, तो ये मैच कर सकता है ना। और ऐसे इस अल्टरनेटिव केस, इसको मैं यहाँ तक लूँ, इसको मैं यहाँ तक लूँ और इसको मैं पूरा ले लूँ, उसमें भी हो सकता है कुछ मैच कर जाए। तो इन दोनों का मेरे को क्या निकालना है, लॉन्गेस्ट निकालना है, तो मैं इन दोनों चॉइस करके ले लूँगा, मैक्सिमम ले लूँगा। यार जो चॉइस डायग्राम में चॉइसेस आती है ना, और जो अपने से पूछा होता है, मिनिमम पूछा होता है, मैक्सिमम पूछा होता है, जो भी पूछा है वो चॉइस डायग्राम में ही अपन मैक्सिमम मिनिमम कर देते हैं। तो बेसिकली चॉइस डायग्राम क्या बन रहा है, चॉइस डायग्राम बन रहा है, देखते हैं क्या है चॉइस डायग्राम। मेरे पास एक स्ट्रिंग रखी है यहाँ पर, ये दूसरी स्ट्रिंग रखी है, अलग अलग साइज की, ठीक है। मैंने इसका लास्ट का चेक करा, मैंने इसका लास्ट का चेक करा, राइट, इक्वल लेंथ वाले, मैंने बोला ये दोनों इसका लास्ट का और इसका लास्ट क्या है, चॉइस डायग्राम देखते हैं ना बहुत आराम से, और इसी पे डिपेंड करेगा ये क्या है चॉइस डायग्राम, इसी पे डिपेंड करेगा कि अपना रिकर्सिव कोड करेंगे। एक बार तुमने ये बना लिया तो रिकर्सिव कोड बनाना बहुत ईजी है, ठीक है, रिकर्सिव कोड लिखना बहुत ईजी है। मैंने बोला ये दोनों क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, ये दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। अगर दूसरा केस क्या हो सकता है, ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सी एक ही चॉइस है, मेरे को ये यहाँ से भी हटा देना है और यहाँ से भी हटा देना है, इसका लास्ट यहाँ से भी हटा देना है, यहाँ से भी हटा देना है। तो अगर ये दोनों मैच नहीं कर रहा है तो मेरे पास दो चॉइसेस है, दो चॉइसेस क्या है मेरे पास, या तो मैं इसका ये और ये लूँ, या तो मैं यहाँ पर इसका लास्ट, यहाँ ब्लू वाले का जो लास्ट है ना वो हटा दूँ और ब्लैक वाले का लास्ट मैं रहने दूँ। आगे बस ये दो चॉइसेस हैं। सो जब मेरे पास दोनों के लास्ट का एलिमेंट, ब्लू वाला लास्ट का एलिमेंट जो स्ट्रिंग ब्लू है, उसका लास्ट का एलिमेंट जो स्ट्रिंग ब्लैक है, उसका लास्ट का एलिमेंट मैच कर रहा है, तो मैं दोनों का लास्ट का एलिमेंट हटा दूंगा। पर अगर मैच नहीं कर रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी एक का हटाऊंगा एक टाइम पे। मैंने इस बार ब्लू का रखा, ब्लैक का हटा दिया, और इस बार ब्लू का हटा दिया और ब्लैक का रखा, सॉरी ये ब्लैक है, सब ब्लैक का रखा, ठीक है। और क्योंकि अपने को क्या चाहिए, लॉन्गेस्ट चाहिए, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस चाहिए, कॉमन सब सीक्वेंस लॉन्गेस्ट चाहिए। तो लॉन्गेस्ट अब देखो जहाँ पर इतनी चॉइस मिलेगी, यहाँ पर तो ये क्या चॉइस मिलेगी, यहाँ तो इफ कंडीशन लगी है एक्चुअली, इफ अगर मैच कर रहा है कि नहीं, ये चॉइस नहीं है यहाँ पर, तो इफ कंडीशन के बाद है, तो यहाँ पर एक ही चॉइस मिल रही है, यहाँ दो चॉइसेस है, या तो ये कर सकते हो या ये कर सकते हो। तो यहाँ पर तुम क्या लगा दो, मैक्सिमम, क्योंकि क्या पूछ रहा है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। एक बार ये कर लिया, बहुत ईजी है, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैंने लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस क्या रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा बताओ। लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस में अपने को क्या रिटर्न करना है, एक्चुअली लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, जो कि 4 आ रही थी इस वाले केस में, जब अपने एग्जांपल लिया तो अपन रिटर्न करेंगे इंट।
फिर मैंने फंक्शन लिखा LCS, राइट। उसमें मैं ये स्ट्रिंग पास कर दूंगा, स्ट्रिंग x पास कर दूंगा, स्ट्रिंग y पास कर दूंगा, इसके साथ साथ इसका साइज भी पास कर दूंगा, int n और int m। ये तो इनपुट में था, एक स्ट्रिंग थी, दो स्ट्रिंग रखी थी, उनका साइज भी था, तो मैंने ये पास कर दिया। फिर मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, बेस कंडीशन, जो हम लोग पहले लिख चुके हैं, बेस कंडीशन पहले लिख चुके हैं, राइट। बेस कंडीशन क्या थी, इफ n इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 0 रिटर्न 0, ये होगी मेरी बेस कंडीशन। अब मैंने बोला यहाँ पर मैं लिखूंगा, बाकी बची हुई जगह पे चॉइस डायग्राम, क्या लिखूंगा, चॉइस डायग्राम को, जो चॉइस डायग्राम का भी कोड देख लेते हैं, क्या बोला चॉइस डायग्राम। चॉइस डायग्राम कोड बोलता है, सबसे पहले आपने को चॉइस डायग्राम लिखते हैं, इफ बोलना है। अच्छा, सबसे पहले इफ बोलना है, इफ लिखते हैं। इफ क्या इफ है, लास्ट का मैच कर रहा है कि नहीं, तो x n-1 इज इक्वल टू y n-1 है कि नहीं, अगर है तो हम लोग यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पे कोई चॉइस मिल रही है, नहीं है तो कोई चॉइस नहीं मिल रही, तो यहाँ पर क्या है, खाली दोनों को हटा दो। यहाँ पे दो चॉइस थी, यहाँ पर एक का हटा सकते थे एक टाइम पे, यहाँ पे ब्लू वाले का रखा, ब्लैक वाले का हटा दिया, ब्लू वाले का हटा दिया, ब्लैक वाले का रखा, यहाँ पर दोनों का हटा दिया, ब्लू का भी हटा दिया लास्ट का एलिमेंट, ब्लैक का भी लास्ट का एलिमेंट हटा दिया हम लोगों ने। बेसिकली अभी हम लोग को चॉइस नहीं मिली तो रिटर्न, और हाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये कॉमन आ जाएगा, ये वाला जो है ये कॉमन आ जाएगा, राइट। ये पेन खत्म हो गया है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये वाला लास्ट का कॉमन आ गया, तो अपने को ये अगर ये h है और ये भी h है, अगर ये h है और ये भी h है, तो अपने को एक LCS में एक प्लस कर देना है। LCS जो भी आएगी बाद में, इसमें से और इसमें से LCS निकल के जो भी आएगी उसमें +1 कर देना, क्योंकि अपने पता है यहाँ पर ये वाला तो कॉमन था, उसके बाद इसमें से LCS निकालो, LCS इसमें से निकालो और उसमें +1 कर दो, राइट। मेरे को पता है भाई, मैंने दो स्ट्रिंग दे रखी है, मेरे को पता चल गया ये लास्ट वाला तो दोनों का कॉमन है, तो तुम LCS इस वाली स्ट्रिंग से निकाल दो, बची हुई में से जो उसमें से निकाल दो, +1 कर देना, क्यों, क्योंकि ये वाला तो कॉमन मिल ही गया, बाकी LCS को इन दोनों में से निकाल दो और +1 कर दो। तो यहाँ पे क्या करूँगा, रिटर्न में +1 किया मैंने, और LCS में क्या करूँगा, दोनों में से माइनस हो रहा है, तो x तो वैसे पास कर दी, y तो वैसे पास कर दी, साइज कम कर दिया, n-1 कर दिया, पहले n साइज था m साइज था, अब n-1 m-1 कर दिया, राइट। और फिर एल्स में क्या है, ऐसा अपने पास दो चॉइस है, चॉइस क्या क्या है अपने पास, चॉइस अपने पास पहली चॉइस बोलता है कि LCS क्या करो, x में रिटर्न रखा है हम लोगों ने लास्ट का एलिमेंट, तो x की जो साइज है वो n है, तो n को n रख दो, और y में अपन ने ब्लैक वाला हटा दिया तो m-1 कर दिया, ये चॉइस पहली होगी। दूसरी चॉइस में क्या अपन ने x पहले वाले का हटा दिया, तो LCS x और y तो स्ट्रिंग है, तो इसमें अपन n है तो इसका साइज कम कर देंगे और इसका साइज m का m रहने देंगे पहले जैसा, इसमें दोनों का काम किया था m-1 m-1, यहाँ पर अपन ने एक टाइम पे एक का किया है, और इन दोनों चॉइसेस में से क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना है। चॉइस डायग्राम सही बना देना तो एकदम सही बना दो, तो यहाँ पे ये रिटर्न कर दो, 1 प्लस क्यों नहीं करा यहाँ पे 1 प्लस का, यहाँ प्लस 1 प्लस क्यों नहीं किया, क्योंकि ये तो कॉमन ही नहीं आएगा ना, यहाँ पे h है यहाँ पे r आ रहा है, मान लो यहाँ पे h है और यहाँ पर लास्ट वाले में r आ रहा है, यहाँ पे मान लो अगर h आ रहा है यहाँ पर r आ रहा है, तो ये LCS में काउंट थोड़ी ना होगा, इसमें +1 करने की जरूरत थोड़ी ना है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉमन नहीं है। लॉन्गेस्ट कॉमन सबसेट में अगर कॉमन आ रहा है तो +1 करो, नहीं आ रहा तो नहीं, तो वही हम लोग यहाँ क्या है, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसेट में ये इक्वल है तो यहाँ +1 कर दिया है, और इक्वल नहीं है तो खाली रिटर्न मैक्सिमम कर दिया, इसमें रिटर्न मैक्सिमम कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली ये कोड हो गया LCS का, आई होप समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट हम लोग इसमें मेमोराइज करेंगे इसको, उसको डीपी बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। उसके बाद इसका टॉप डाउन करेंगे, काफी इजी है। कितने लाइन का कोड है, 1 2 3 4 5 6, 6 भी नहीं है यार, ये तो एक ही मैंने लिख दिया है, राइट। 1 2 3 4 5, 5 लाइन का कोड है, इतना आसान कोड है। तुम लोग ऐसे ही प्रॉब्लम क्लोज करने समझ नहीं आ रही थी, मैंने क्या बताया, एक बार साफ कर लेते जो मैंने अभी तक बताया तुमको। मैंने तुम्हें क्या क्या बता दिया कि बेसिकली सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि LCS में क्या होगा, LCS में दो स्ट्रिंग रखेंगे x और y, दो स्ट्रिंग रखी होंगी, उसका साइज भी होगा n और m। तो मैंने बोला कि रिकर्सिव कोड लिखना है इसका, और उसमें अपने को लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की लेंथ निकाल के देनी है, ठीक है। तो मैंने बताया कोई भी रिकर्सिव फंक्शन कैसे लिखते हैं, पहले उसका रिटर्न टाइप लिखते हैं, फिर फंक्शन का नाम, उसमें इनपुट दे देते हैं, फिर उसकी बेस कंडीशन लिखते हैं। बेस कंडीशन कैसे लिखेंगे, बेस कंडीशन इसकी बेस कंडीशन कैसे लिखेंगे, तो मैंने बताया कि बेस कंडीशन के लिए थिंक ऑफ द स्मॉलेस्ट इनपुट। स्मॉलेस्ट इनपुट में सोचा तो क्या आ गया, स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट, इनवैलिड भी नहीं सोचना। तो यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ 0 होती है, इसका तो इक्वल अपने स्मॉल एक तो स्मॉल होना चाहिए, n-1 हो रहा है यहाँ m सही है, हाई भीम। सो इसमें इस प्रॉब्लम में हम लोग LCS हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। LCS का रिकर्सिव वर्जन लिख चुके हैं। अब रिकर्सिव हम लोग को पता है कि रिकर्सिव में सब प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अभी हम लोग को क्या चाहिए, इसका बॉटम अप वर्जन लिखेंगे, मेमोराइज वर्जन। ये डीपी होती है, डायनामिक प्रोग्रामिंग होती है, बहुत इजी होता है, इसको रिकर्सिव कोड से इसका मेमोराइज वर्जन लिखना बहुत इजी होता है। तो अपना फ्लो क्या रहेगा पढ़ने का, हम लोग LCS कर रहे हैं, हम लोग अभी रिकर्सिव वर्जन लिख चुके हैं, अब इसका मेमोराइज वर्जन लिखने जा रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग उसका टॉप डाउन डीपी लिखेंगे, दिस इज ऑलरेडी डन। अभी हम लोग ये करेंगे और फ्यूचर हम लोग ये करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी मैं फ्लो देखिए हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले तो चलो मैं तुम्हें ये बता दूं, सबसे पहले फ्लो में व्हाई डू वी नीड इट, अपनी अपने को जरूरत क्या है, अपना रिकर्सिव कॉल लिख लो, अपनी इसकी जरूरत क्या पड़ेगी कि अपन ये वाला कोड लिखें, मेमोराइज वर्जन करें, रिकर्सिव को मेमोराइज करें, अपन जरूरत क्या पड़ेगी तो मैं एक बार समझा दूंगा। अगर तुम लोगों ने नेक्स्ट का वीडियो देख चुके तो तुम्हें ये बड़ा इजी लगेगा, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं होता, खाली 2-3 लाइन ऑफ कोड और लिखनी पड़ती है, और रिकर्सिव वर्जन जो हमारा कोड था उसमें थोड़ा 2-3 लाइन कोड बढ़ा के अपन जरा सा वेरिएशन करते हैं और ये कोड बन जाएगा। खैर अभी मैं तुमको बताऊंगा उससे पहले कि व्हाई डू वी नीड इट, फिर हम लोग इसमें मैट्रिक्स बनाते हैं, तो मैट्रिक्स का साइज क्या होगा एंड हाउ डज इट वर्क, एंड देन वी विल डिस्कस द कोड वेरिएशन। ये तो पुराना वाला LCS का कोड है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये कोड अपन वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद दिस कोड, राइट। ये अपने पास क्या है, LCS का कोड है, रिकर्सिव कोड लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे LCS का, जो कि अपने प्रीवियस वीडियो में जाके सीखा। और तुमने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो जरूर देख लो, क्योंकि ये कोड हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, जो कि LCS रिकर्सिव है, ठीक है। सो अभी हो क्या रहा है, तुमने बहुत सुना होगा सब प्रॉब्लम्स, डीपी में जब भी बात होती है तो सब प्रॉब्लम्स की बात होती है। Oh, I think I'm just streaming it unnecessarily. I will watch this video, and we need to jump into LCS, right? So maybe today I'll finish it, and then we can. I will start solving these problems. Longest seems good, something new. Stock. I think they kept on the same kind of way. DP on string, DP on stocks, DP on LIS. Let's see. Thanks. I will take shower, and after that I will start learning AI.
Today I haven't streamed for 1 hour even. What? Oh, it's already 1 hour. Thanks.